Hi, I'm Atika. The person I'm going to be in conversation with today, his career is what dreams are made of. इनकी मदर मिसेस आयशा श्रॉफ ने कटरीना कैफ को फिल्मों में लॉन्च किया था. इनके फादर मिस्टर जैकी श्रॉफ इज अ वेरी कंसिस्टेंट एक्टर for decades actually, और वो अपनी फराख दिली के लिए जाने जाते हैं. And he himself, with his vulnerable looks, with his daredevil stunts, and his fairy tale-like dance moves, he is the apple of the eye at the box office and everywhere else. इनकी videos देख के तो मेरा भी मन करता है that I start dancing. Please welcome Tiger Shroff. Thank Hi, you. Tiger. Hi, thanks. So, Tiger, tell me, 2014 you started, and you have become like this huge thing, a precious thing at the box office and for the industry as well. Thank you. How do you gather this whole situation, which is overwhelming, overpowering? मैं अपने आप को ऐसा नहीं मानता हूँ, खासकर क्योंकि I'm forever. मैं एक बहुत मैं लालची हूँ, मुझे सीखने का बहुत लालच है. I want to learn, I want to continuously learn, and I feel like I haven't learned anything as of yet. इस मूवी में मुझे एक मौका मिला मेरा हीरो के साथ काम करने को. Just watching him on set was a huge learning, and I couldn't ask for a better school than this. दिल्ली बहुत दूर है मेरे लिए, पर I'm very, very blessed and happy to be in the situation, in the position I am today. Tiger, you are surrounded by this whole coterie of people. That's how industry works. वो आपको एक खास बातें बताते हैं. एक इमेज बिल्डिंग एक चीज़ है. दुनिया से कनेक्ट जो है वो कभी-कभी छूटने लगता है. आप रियलिटी चेक कैसे करते हैं? मैं बहुत एंटी सोशल हूँ और मैं अपना लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई करता हूँ. In that, I just, for me it's work, home, sleep. Work, home, sleep. तो इससे ज़्यादा मेरा कुछ है ही नहीं. I'm not much into partying. I'm not much into, they say you should go and meet people and socialize, but I can't do that because I'm very awkward at these social gatherings. But yeah, so I try and simplify my life as much as possible. तो ये तो बहुत ये तो खामी है एक एक्टर की कि वो सोशलाइज ना कर पाए. कोशिश करता हूँ काम से जवाब देने के लिए, ज़्यादा बोलता नहीं हूँ पर कोशिश करता हूँ काम से जवाब देने के लिए. Like I said, I want my work to speak. I want to do good work. I want to touch as many people as possible through my movies. And yeah. बम्बैया हिंदी बोलते हैं आप डैडी की तरह? डैडी की तरह. उन्हीं का बेटा हूँ मैं तो यार. अच्छा, with your father, Tiger, he comes with 40 years of experience in this industry. Yes. Failures, losses, success, glamour, everything. Your mother was a producer, is a producer, herself a very accomplished woman, smart woman. घर में बातचीत क्या होती है? अफसोस की बात है पर ज़्यादा मौका नहीं मिलता है वक्त बिताने के लिए एक दूसरे के साथ. तो it's always on the go. अच्छा. So I briefly see my parents in the morning before leaving for work, but जब भी मौका मिलता है we go out for lunch or dinner. But it's been a while. But we always talk about how's work going. They always ask me, so how was shoot today? What did you do? This, that. मैं जानबूझकर जितना हो सके कोशिश करता हूँ to just keep them away from my career because every time they see my films, I want them to be pleasantly surprised. अच्छा. And feel like कि यार we didn't expect this, we didn't expect that. So that's my goal. ये तो बड़ा पुराना सवाल हो गया कि आपने अपने फादर से क्या सीखा. Tell me, आपने जैकी श्रॉफ जी से क्या नहीं सीखा? Wow, that's a good question. What have I not learned from Dad? I can never be as cool and as bindas as him in social gatherings and all. मैं अपने आप को बहुत बंद करके रखता हूँ. वो मतलब बहुत खुल के रहते सबके साथ, बहुत बिंदास रहते सबके साथ. And I think I never learned that from him, the art of being bindas. और आपने अपनी माँ से क्या सीखा है? She's a very sharp woman. सीखा है. मेरी मॉम बहुत systematic, बहुत organized है, बहुत neat, clean freak है. तो like her, she has a discipline in that, and I guess I got my discipline from her. Discipline. So discipline. Yeah. One scene from War जिसको करते वक्त आपको लगा माय गॉड ये एक्शन आसान नहीं है. अगर एक एक्शन सीक्वेंस की बात करो तो मेरे लिए जो मुश्किल रहा था,
जो मुश्किल था वो है मेरा इंट्रोडक्शन फाइट सीक्वेंस. एक वन शॉट एक्शन था बिना कोई कट्स के. तो 2-2.5 मिनट के लिए कंटिन्यूस लड़ना थोड़ा मुश्किल था. आज आप कंटेम्प्रेरीज हैं, आप और ऋतिक. एक टाइम ऐसा था जब वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे फिल्म किंग अंकल के सेट पर. Oh, yes. और आप जाकिदा के बेटे, मतलब उनके बेटे होने की हैसियत से आप सेट्स पर वक्त बिताते थे. हाँ. कोई एक मेमोरी तो बताइए. मैं तो खैर बहुत छोटा था तो मुझे ज़्यादा याद नहीं है, पर मुझे याद है ऋतिक सर बताए थे मुझे. हम लोग शूट कर रहे थे पोर्चुगल में और एक किस्सा शेयर कर रहे थे मेरे साथ किंग अंकल के सेट्स पे कि वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे और उनका पापा काफ़ी स्ट्रिक्ट थे उनके साथ. तो वो मतलब ही यूज्ड टू स्टे विद ऑल द एडीज और मैं लकीली डैड के साथ रहता था. तो डैड यूज्ड टू ऑब्वियसली गेट अ नाइस रूम एंड अ नाइस होटल एंड दिस एंड दैट. तो एक दिन डैड ऋतिक सर को बोले कि ऋतिक यू गो टू माय होटल एंड just hang with my boy, take care of My baby, my son, yeah. और ऋतिक सर खुश हो गए क्योंकि उनको एक ये होटल मिला और ऑरेंज जूस ऑर्डर कर रहे थे, ये ऑर्डर कर रहे थे वो. तो बहुत खुश हो गए. And I guess that's when I first met Hrithik sir. I don't remember that meeting obviously, but that's what he said, and I found that very endearing, and I wish I could remember it more. क्या ये सच है कि आपने एक टाइग्रेस को अडॉप्ट किया है? Is it on the? Yes, it is on the yes. internet? नागपुर में एक टाइग्रेस ली नाम है, and I had adopted this tigress a long time ago, since my first film. Yeah. Really? Especially because the whole endangered species, and and back then it was worse. So yeah, they were on the brink of extinction. Dance forms जो आपको लगता है सबको जरूर सीखने चाहिए. Bollywood, freestyle. I like break dancing, so I'm going to say break dancing. Yeah. I think that covers quite a few styles, Bollywood and all. Bollywood के अंदर काफी styles आते हैं. Yeah. 3 must food habits which everyone must follow. Don't have too many gaps in between your meals because it creates acidity and it's not good for your metabolic rate. Hydrate as much as you can. Try not eating carbohydrates at night. At night after 7 p.m. After 7 p.m. Yeah. Okay. आपके अंदर कोई एक ऐसी बात या आदत जो आप चाहते हैं ये चली जाए? मैं अपने आप से खुश नहीं हूँ. मुझे कभी मैं अपने आप को कभी शाबाशी नहीं करता हूँ या शाबाशी नहीं देता हूँ. I'm very hard on myself, so I feel like sometimes I should go a little easier and be happy of what I've done or I can do. तो अगर शाबाशी देंगे तो क्या देंगे अपने आप को? Like a watch or a holiday? क्या अपने आप को इनाम देना पसंद करेंगे? Ice-cream. I love ice-cream. अपनी डाइटिशियन के ऑर्डर्स के खिलाफ exactly. जाकर. उनके खिलाफ जाऊंगा. As an actor, as a performer, how do you deal with and fight criticism? Well, I welcome criticism because I want growth. I told you, I'm very hungry. I'm very बहुत लालच है, सीखने का बहुत लालच है. आपका पैशन है मार्शल आर्ट्स और आपने अपना बहुत वक्त और एनर्जी उसकी तरफ डिवोट की है. आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आए मार्शल आर्ट्स की वजह से? Learned how to channelize my energy and just discipline myself. I've learned to channel, my thoughts and my physicality and sort of make them one. और आप इतनी रिगरस एक्टिविटीज करते रहते हैं. स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो आपके दिमाग को सुकून दे, वो क्या करते हैं? मेडिटेशन करता हूँ मैं. Yeah? प्राणायाम करता हूँ मैं. Yeah, that's it. हर लड़की को सेल्फ डिफेंस के लिए 2-3 चीजें क्या जरूर सीखनी चाहिए? I think was awareness or being aware of situations and the right decisions, making the right decisions at the right time, knowing who your friends are, knowing your circle, knowing the place you're at, and you should have trustworthy people around you at all times, really. But that is something internal, ना टाइगर. एक्सटर्नल भी करना पड़ता है, अपनी बॉडी को ट्रेन करना पड़ता है to fight. I think obviously learning martial arts to empower yourself and to feel a high self-esteem and high confidence. अक्सर ऐसा होता है और आपके साथ भी हो चुका है कि आपके फादर और आपकी फिल्म एक ही तारीख को रिलीज होगी. हो चुकी है शायद once in the past, isn't it? Actually, मेरी पहली फिल्म हीरोपंती, उनकी एक फिल्म आई थी कोच्चा डयान करके रजनीकांत जी के साथ.
Yeah. So there was no joke, but from that day onwards, competition began at home. ग्रोइंग ईयर्स में आपके फादर की वो कौन सी फिल्म थी जिसने आपकी प्रोफेशनल लाइफ को शेप किया? I think Parinda. I think that was one of the turning points in my father's career. He was fantastic in that film. और obviously hero तो बहुत मेरी favorite film है उनकी. तो Okay. And what do you want to be known as? What is the best brand that you want to carry? एक सेंटेंस में कि ये इस चीज के लिए जाना जाता है. I just want to be a hero who can touch as many people as possible and who can, you know, connect with as many people as possible. Okay. Yeah. Show me a dance move. Show you a dance move. I don't dance for free anymore. Sorry. Yeah. आपने इंटरनेशनल फिल्म भी की और इंडिया की अलग अलग लैंग्वेजेस में फिल्म्स भी की, मराठी से स्टार्ट किया. कितनी कितनी भाषाओं में फिल्म कर चुकी हैं आप, कितनी लैंग्वेजेस में? हिंदी, मराठी, तेलुगु, जो कि डब हुई बाद में मलयालम और तमिल में. लेकिन उम्मीद करती हूँ कि सारी भाषाओं में, इंडिया के जितनी भी भाषाएं, उन सारी भाषाओं में मैं काम करूँ. तो जब कहा जाता है वन इंडिया वन सिनेमा, डू यू थिंक दिस इज द एज ऑफ वन इंडिया वन सिनेमा? Yes, this is the age. और मैं actually I can't tell you, I'm so proud to be entering the industry at this time because मुझे ना कि सिर्फ मराठी सिनेमा का हिस्सा बनने को मिला, लेकिन हिंदी और तेलुगु. अभी 2 ऑस्कर्स भी आए हैं हमारे देश, and what could nothing prouder, you know, I'm so proud and I really want to represent India on a global level, you know. And people would want to know about your journey. When you would have been growing up, तब तो वन इंडिया वन सिनेमा नहीं था. Then cinema was dancing around the trees. तो आपने यही सपना लिया था कि ऐसा ही सिनेमा करना है? You know, बहुत लोग यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने बहुत ही संघर्ष, you know, they've had their share of journey. बहुत you know, फाइट करके फैमिली से या circumstances से वो आज यहाँ तक पहुँचे. एंड आई एक्चुअली वांट टू थैंक माय फैमिली क्योंकि शुरुआत में मुझे उनका सपोर्ट नहीं था, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि क्या होगा, इंडस्ट्री कैसी है, अच्छे रोल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. बट टू बिगिन विथ, जब टेलीविज़न से शुरुआत हुई तो एक अपनापन सा लगा. और उससे एक स्टेप ऊपर मराठी सिनेमा से शुरुआत की. और क्योंकि मैं महाराष्ट्रन हूँ, फैमिली जब पूरी टीम और क्रू से आकर मिली, जो सब्जेक्ट्स थे उनके बारे में उनको पता चला, सो दे फेल्ट वेरी प्राउड. फिर लव सोनिया की बात आई, और जब फिल्म रिलीज़ होने से पहले फिल्म फेस्टिवल सर्किट्स में जब राउंड्स कर रही थी, तो जो कमेंट्स आ रहे थे कि मृणाल, यू आर द नेक्स्ट स्मिता पाटिल. तो स्मिता पाटिल फॉर मी इज़ माई गॉडेस. मैं उनको वर्शिप करती हूँ. उनके सारे फिल्म में मैंने बहुत स्टडी किए हैं, और दिस इज़ अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट स्पेशली फॉर अ मराठी गर्ल. तो नाउ माई फैमिली सेज कि यू नो व्हाट मृणाल, we are proud of you. There's no looking back. Just one thing. जो भी फिल्म का आप हिस्सा बनोगे, make sure that the audience learns something out of it. जब अलग अलग लैंग्वेजेस के रोल्स होते हैं और उनके डायलॉग आपको दिए जाते हैं, तो वो डायलॉग तो आपको समझ में नहीं आते होंगे, तो फिर कैरेक्टर में कैसे जाते हैं? गुड क्वेश्चन. क्योंकि मेरी मदर टंग जो है वो मराठी है, तो मराठी से, और वो जो स्क्रिप्ट लिख कर आती है वो इंग्लिश में आती है. तो इंग्लिश से मैं मराठी में ट्रांसलेट करती हूँ, और फिर मराठी से तेलुगु. सो द प्रोसेस इज़ 3 times मोर देन व्हाट इट शुड बी इन हिंदी और मराठी. पर डायलॉग्स को लर्न करती हूँ. कभी कभी एडीज़ हेल्प भी करते हैं मुझे, टीचर भी है, और नई भाषा सीखनी मेरी आदत है. मेरी स्कूलिंग ना कि सिर्फ मुंबई में हुई, लेकिन केरला में, नागपुर में, अहमदनगर, तो हर जगह हम घूम कर आए हैं. तो भाषा सीखना मेरे लिए it's fun. I really enjoy learning तो languages. आप सक्सेस मिलने के बाद कभी गई, स्कूल गई, या अपने पुराने फ्रेंड्स से मिली, या पुराने टीचर्स से मिली? If you won't believe, मेरे सारे फ्रेंड्स जो है ये मेरे स्कूल से फ्रेंड, मतलब हर जगह से एक एक बेस्ट फ्रेंड मेरा है, और अब भी हम टच में है, क्योंकि मेरे ज़्यादा इंडस्ट्री में फ्रेंड्स नहीं है. ऐसा क्यों?
मतलब they are my colleague and they're very supportive. But जो एक friendship है ना, जो बचपन से वो कहते हैं ना कि they're very honest. और मुझे लगता है कि ऐसे दोस्तों का आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है जो आपको सही चीज़ बताए, क्योंकि ये वर्ल्ड ऐसा है, it's full glamorous, it's about nice things, but I want to surround myself with people जो मुझे बताएं कि ये काम सही नहीं है या ये काम अच्छा है. तो ये जब इतना आपके पास सपोर्ट सिस्टम है जी. तो फिर दिक्कत क्यों आती है, फिर वो स्ट्रगल्स क्यों आती हैं, इमोशनल स्ट्रगल्स, लो होने की स्ट्रगल्स? कभी कभी लगता है कि और अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए. मुझे तकरीबन 10 साल लग गए टेलीविज़न से, हिंदी फिल्म से तेलुगु फिल्म सीतारामम मिलने के लिए. और जो रोल है सीतारामम में सीता का, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रोल्स. लेकिन वो रोल पाने के लिए मुझे आई हैड टू prove them over and over and over again. There was a point where I felt कि I was deserving, but I was not getting ऐसा कोई पर्टिकुलर रोल जो आपने मिस किया, जो आप बताना चाहेंगी? जी, but it was good क्योंकि it was a great learning. Rejections किस तरह से आप लेते हैं, that is also important. There were some beautiful films like जय गंगाजल, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने काम किया और बहुत ही I look up to her work, I love her. और शायद जो उन्होंने किया वो मैं उस वक्त कर नहीं पाती और मैं रेडी नहीं थी. तो मैं ये सोचती हूँ कि you know what Mrunal, maybe you're not ready then, you need to work so hard to reach there. वो कहते हैं ना कि भगवान तभी देता है जब he knows that you will value it now. मेरे ख्याल से ऑडियंस भी इससे एग्री करेगी कि आपके फ्रेंड्स ठीक कहते हैं, आप ऐसे ही रहिएगा. Thank you. Thank you so much. Thank you Mrunal Thakur. everybody. Ricky, I know it's been close to 2 months when the Grammys were announced, but congratulations for the Grammy Award. This was, of course, your 3rd Grammy. You bagged the Grammy Award for your album Divine Tides in the Best Immersive Audio Album category. Would you please like to express your joy again, like an acceptance speech? Thank you so much. Thank you so much. It feels really good to win the Grammy Award for the 3rd time, and this time for the Best Immersive Audio Album category. It's a category that cuts across genres. So we were not only competing with albums that sounded like our album, but we also were competing with albums in such diverse kinds of genres of music. We were competing against Christina Aguilera, who's a pop icon. We were also competing against Chainsmokers. So it felt good that Indian music competed with these amazing icons and we emerged victorious. So it was a great moment to actually win for this album. You've been representing India at the Grammys since 2015, when your album Winds of Samsara won the Best New Age Grammy. Have you noticed a tangible change in the perception towards Indian artists and music from West now? See, we have to look at Indian music in 2 broad categories. One would be the traditional music, that is the Indian classical music and the folk forms. And on the other side, you would have the pop music, which is basically the film music, Bollywood music, South Indian music, all of that stuff. Now, when it comes to the traditional music, that has been appreciated forever. Because if you look at Pandit Ravi Shankar also has won 3 Grammy Awards. He's performed everywhere in the world. And while he was alive, if you would go to a concert of his, the people in the audience of that particular theater where he's performing would be very representative of the demographic of the city itself. Whereas when it comes to the pop music forms, what is happening is that the pop musicians and the Bollywood musicians, when they go abroad, they are able to fill up stadiums, they are able to fill up auditoriums and have large audiences, but most of that audience is the Indian diaspora. So basically it is the classical musicians like Ustad Zakir Hussain, Pandit Ravi Shankar, Ustad Ali Akbar Khan, Ustad Amjad Ali Khan, Pandit Hariprasad Chaurasia, Pandit Vishnu Mohan Bhatt. These are the amazing people who have actually broken cultural barriers and have been the flag bearers of Indian culture all over the world. So I believe that Indian classical music forms and traditional music forms have been appreciated always by the West. It's just that the pop music forms are starting to get recognized now. In last year, after winning a Grammy, you met PM Modi. Yes. What all you discussed with him and what type of music does he like? So the first time I met Prime Minister Modi was in 2015 when I won my first Grammy.
And what I thought was going to be a 5-minute photo op, just a picture with the trophy, it ended up being almost an hour-long discussion on the environment, about sustainability. And he was going to be visiting the Paris Climate Change Agreement, the Paris Climate Change Conference, rather, in December that year. And we discussed a lot about that. And then I made an album called Shanti Samsara after that, featuring 500 musicians from over 40 countries. And I showcased the album to Prime Minister Modi. He loved it. He ended up launching that album at the Paris Climate Change Conference. And then after that, I performed for Prime Minister Modi a few times after that. And then in 2022, when I met him again, after winning my second Grammy, he was, of course, very, very happy and thrilled that, that I found this success for a second time. He told me how much he appreciated my music. So I guess I do not know what kind of music he likes, but I'm really thrilled that he appreciates the music that I make. Now, you of course collaborated with musicians from across the world, from Native American flute players, Tibetan monks, South African choirs, and musicians from Turkey and koto players from Japan. What type of newness a collaboration like this brings to a song? So it brings about communication between different cultures. That's what I believe. Because it has to be mutually respectful. It should not be that I'm adding a little bit of Japanese music. So, I just thrown a little bit of koto over here and thrown a little bit of taiko drums. It has to be a proper 50-50% collaboration of minds and hearts. Like, for example, there is this Algerian violin player who I'm a huge fan of. And what I did was that I wanted to collaborate with him. So I traveled to Algeria and, and I was trying to, communicate with this violin player about what kind of music that I wanted to create. And it was a very frustrating experience simply because I could not speak his language and he could not speak my language. And our cultures were so vastly apart that even sign language was not working, because our reference points were so different. Then I just sat on the piano and I started playing a tune. And then he pulled out his violin and he started responding to my tune, And then we did that for about 2 hours. And then that became a song called Rumi in one of my albums. Is there a plan to collaborate and compose music for a Bollywood film or a series for an OTT platform? I would absolutely love to do that, but it's very, very important for me that the series or the film has got a very strong social message at its heart. Like, for example, I just finished a Malayalam film, a film called Adrishya Jalakangal, amazing 2-time National Award-winning director called Dr. Biju Kumar, and starring the superstar of the Malayalam film industry, a guy called Tavino Thomas. So the thing is that it is a mainstream Malayalam film, but at the heart of it, the film is basically an anti-war movie. And it has been narrated in such a beautiful story. So that is why I was very thrilled to be a part of that movie and compose music for that film. And you will see, as you mentioned, there is a complete newness that I've brought into the score of that movie. Hoping to see you each year at the Grammys. Thank you so much and best of luck. Thank you so much.